सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले मैंने 4 या 5 वीडियोस बनाए। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हमारी जो डेली रूटीन होती है, मतलब जो अपनी दिनचर्या होती है, उसे कैसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहिए, राइट। एंड अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। देखो दोस्तों, हमने यही बताया कि फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके हम अपनी सारी जो डेली रूटीन है इसको मेंशन कर सकते हैं, राइट। वी कैन एक्सप्लेन आवर डेली रूटीन ओनली बाय यूजिंग वन टेंस एंड दैट इज प्रेजेंट indefinite tense, right. And second one thing is today I will tell you about the second one tense, that is present continuous tense. फ्रेंड्स, आप लोग ये मत सोचना कि आप हर बार टेंस, हर चीज़ में टेंस क्यों ला देती हैं। मेरा कहने का मतलब है, एक्चुअली आप लोगों को जो बेसिक है वो चीज़ तो पता होनी चाहिए, राइट। वह जैसे कि हम किसी का भी कॉन्वर्सेशन वीडियो देखते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट माय इंग्लिश जर्नी, सो व्हेन आई स्टार्ट लर्निंग दिस इंग्लिश लैंग्वेज, सो I have watched many conversation videos, right. And to be honest friend, whenever we start those kind of conversations videos, sometimes we aren't able to understand what they are trying to say, because we don't know the meaning of each and every sentence. So that's why today I am making these videos for to make them understand to those people who really interested in this English language and who really want to learn this English language, right. तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, मुझे बीच बीच में हिंदी भी बोलना पड़ता है ताकि उन दोस्तों के लिए जो इस भाषा को समझ सके और उस भाषा को सीख सकते हैं। और रही बात इस भाषा को सीखने की, तो आप इसको घर पे भी सीख सकते हो। yes friends, you can learn this English language at your home. First important thing is your practice and your basic knowledge of grammar, and then you start speaking this English language. And each and every video I will tell you the basic sentences, how should we frame the sentences and how should we use it in our daily life, right. And as I told you in my earlier videos, I told you that how should we explain our daily routine, right. And in that video I'm gonna tell you about our present time. For example, in this time I'm talking to you, she's going to market, and she's playing, like all that sentence, it is in continuation form, right. Like now my husband is watching TV, like there are many sentences, right. You can make it very easy, right. So first of all, you have to know each and everything, then you will start this English language. Otherwise, if you directly, like many people, in this time, people, they don't have patience, they don't have like patience, and they want each and everything at a time, right. So it's not possible, right. It's very impossible. For if you really want to learn this language, you have to struggle a lot, right. Then after that you will get that much fluency, right. So इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अच्छा बताऊंगी। जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको मैं आज बताऊंगी कि जैसे कोई भी चीज़ है प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम कैसे करते हैं। जैसे नेहा स्कूल जा रही है, सो नेहा इज़ गोइंग टू स्कूल, राइट। एंड शी इज़ प्लेइंग, she is taking a bath, right. There are many sentences like now we are reading a book, she is reading a book. Why is she reading a book? Like there are many questions, right. So first of all, you have to learn this, right. And friends, if you are like my video, so please subscribe my channel. And so yeah, that's it. So there are like many sentences in present continuous tense. And apart from this, today as I mentioned you that you can learn this language, so please daily practice. And as I mentioned you that I also learned this language at home and by watching only YouTube videos. But friend, if I talk about my English journey, so it was not easy for me, because first of all, in 1 month I learned some grammar rules and then I started speaking this language. But if you are at zero level, so this like English, if you are at zero level, so first of all, you have to understand the basic things,
right? You can't jump to next level, otherwise throughout in your life you will not be able to learn this English language. So first of all you have to understand the small small sentence, like प्रिया स्कूल जाती है, देन प्रिया गोज टू स्कूल, प्रिया स्कूल जा रही है, प्रिया इज़ गोइंग टू स्कूल, राइट, एंड प्रिया स्कूल जाएगी, देन प्रिया विल गो टू स्कूल, राइट, एंड ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, राइट, एंड जैसे कि वो आ रही है, प्रिया इज़ कमिंग फ्रॉम हर स्कूल, राहुल इज़ कमिंग फ्रॉम हीज स्कूल, राइट। सो ये सारे सेंटेंसेस आपको फ्रेंड्स आने नहीं चाहिए बनाने के लिए, या तो फिर आप एक कॉपी लीजिए एंड उसको सभी लोगों को नोट डाउन करते जाइए कि हमें जो प्रेजेंट की बात होती है, जो कंटिन्यूशन में काम चल रहा है इन दिस टाइम, जैसे मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम स्पीकिंग। सो कंटिन्यूशन में बात कभी भी रहती है तो वो हमेशा हमें ING के फॉर्म में बोलना पड़ता है, एंड आपको ये हैबिट डालनी पड़ेंगे, एंड इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, क्या मैं बोल रही हूँ, जैसे क्या मैं बोल रही हूँ, एम आई स्पीकिंग, वो बोल रही है, शी इज़ स्पीकिंग, क्या वो बोल रही है, इज शी स्पीकिंग। बट मतलब एक सेंटेंस को हमें 2-3 बार में बनाना चाहिए, जैसे हमें रैपिड फायर अगर कोई कहे तो हमें फटाफट जो सेंटेंस है उसको फ्रेम करने आना चाहिए, राइट। एंड अब हम सोचते कि नहीं हम इंग्लिश हमें 3 से 4 महीने के अंदर सीखना है, ऐसे हाउ इज़ दिस पॉसिबल, नहीं हो सकता। आप चाहे कितना भी कोशिश कीजिए, आप नहीं उस फ्लुएंसी को पा सकते। आपको जब तक अनटिल और अनलेस यू don't understand the basics rules of this English language, you will not be able to learn this language, right? So you have to learn basic things. Yes, and yeah, so that's it. So maybe you like it my video, and maybe you learn something from my video. So first of all you learn today, as I told you, there are 3 to 4 examples of present continuous tense. So you have to just read it, learn it, and then make sentence by yourself, right? Because you know I'm here, I'm here just only for give you like the tricks, right? I'm not saying that you have to learn all the grammars, right? But you just keep learning and just keep watching my videos, right? And 3 to 4 months, then you start speaking, and then you will start speaking English, right? Then you realized yes, that I am right. So that's why I'm telling you, first of all, from today you learn some grammar, and as well as you also start speaking, right? I'm not saying that first of all you learn grammar and then you start speaking English. No. First of all, like there are many sentences. If you're like kid, if your daughter and your son, maybe he's playing, that time it's your responsibility to talk in English. Beta, what are you doing? And like if your son is like they are sometimes they fight with each other like boys and girls. So that time you know, that time to you say, beta, why are you fighting with each other, right? So don't fight, झगड़ा मत करो, don't fight. Why are you fighting with each other, right? Just stop fighting. So like you know, you have to make small sentences, right? And then after that you know, after some time you will get habituated to these English words. So first of all you have to speak 3 to 4 sentences each and every day, every single day, right? So this is what I want to tell in this video, and I hope you will like it. And okay.